It was Dalhousie who first pointed out, he was young, so he pointed out one thing, that there is a disproportionate inducting of the soldiers, as in Indian soldiers and European soldiers. There were 4,000 miles of telegraph lines in India. So Bombay to Thane was the trial, but by that time Calcutta, ये Delhi Calcutta वाला रूट था, Calcutta Bombay का जो रूट था, ये सारे रूट्स जो हैं इस पे काम उन्होंने शुरू कर दिया. इसी 20 years, if I'm not wrong, 1830. Thereafter, now this was a series of development that was going on, and one of the major, change what they required right now was from the point of administration. Though after William Bentinck, there were few governor generals, but gradually, if you will see that the impact and the role of EIC has been changing constantly. The role has been changing constantly, and now they are expanding. Now they are more like a ruler. They are more like the agent of the ruler, because the ruler was not here. But still, due to legalities, the EIC was still the, let's say, the original owner. But as it was mentioned in the Charter Act of 1833, that now EIC will hold the possessions for as a trustee of द क्राउन. अब वो कैसे होल्ड कर रहा है, अब उसकी जो भी उसने पोजेशंस इंडिया में एक्वायर किए हैं, नाउ दे आर नॉट होल्डिंग इट फॉर द कंपनी, नाउ दे आर होल्डिंग इट फॉर एज अ ट्रस्टी ऑफ द क्राउन, एज अ ट्रस्टी ऑफ द क्राउन. सो नाउ indirectly the colonization of India has started, and rather by giving rights to the Europeans that they could settle anywhere in India, the company has, the process of colonization has been legalized in India. Fine. Then came Dalhousie as the next, and he is one of the most क्या कहें, मतलब उसको अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज जिस लेवल का एक्सपेंशन उसने किया, दैट वाज फिनोमिनल. और एक्सपेंशन से ज़्यादा जो उसका रोल था, दैट वाज about consolidating. I told you in the very first flowchart that I gave that the foundation was laid by Clive. The foundation was strengthened by Warren Hastings and Cornwallis. That on that foundation, a construction was done by Wellesley and William Bentinck, and the one who beautified this was Lord Dalhousie. (1848 to 1856). So again, a very misnomer, you can say, in this case, that most of the people feel that Dalhousie was there during the revolt of 1857. He was not. So Dalhousie was not there. He went an year earlier, before the revolt of 1857. So when we talk about Lord Dalhousie, Scottish by origin. So Lord Dalhousie was not English, he was Scottish by origin, but he is, he was the youngest Governor General who was sent. One very important point, that he was the youngest Governor General who was sent to here. So Dalhousie came in 1848. Some of his major contribution, if we talk about, is a major change was done in 1833 Act, that now the Governor General of Bengal will be the Governor General of India. Dalhousie, when he came, he said that no, now this particular position of Governor General of India is performing two positions. One, he is Governor General of India, and second, he is performing the duty of Governor General of Bengal. This will not be the case because he is overburdened. So for the first time, so there was a Governor General was in charge of whole India, as well as separately he was holding the charge of Bengal as well. So a Lieutenant Governor was appointed.
a lieutenant governor was appointed from Bengal. Means the Governor General of India was discharged of his duties of Governor of Bengal. So now there will be a separate administrator for Bengal, who is that Frederick. No, this was brought under the provisions of the Charter Act of 1853. Now, many of the things that were done in the time of Dalhousie were actually the provisions of Charter Act of 1853 and Frederick J. Halliday. Was the first Lieutenant Governor General of Bengal. Frederick Halliday was the first Lieutenant Governor General of Bengal. Then Shimla was made the summer capital of India. It was during this time that Shimla was made the summer capital of India. Sir, this Lieutenant Governor was proposed by Dalhousie or? He demanded that, and then that was, now they cannot take any decision alone. They have to get it ratified or verified from the parliament. So it was he who first demanded that this position is now getting overburdened, and then Act of 1853, it officiated that. It was during the tenure of Dalhousie that Shimla was made the army headquarters as well as the summer capital of India. Now, the artillery, because now gradually they just wanted to shift. They just wanted to shift the concentration of administration that was in Calcutta. So what they did was, because now they were expanding and they needed to control the whole region, and if you will see, Calcutta was getting a bit on the eastern side. So one thing that was done, that the artillery headquarters was relocated from Calcutta to Meerut. That is why 1857 revolt, Meerut cantonment will move. When the main action will take place, or the beginning will be, though in Barakpur there will be some action, but the real action will start from the Meerut cantonment, because the artillery headquarters was shifted to Meerut cantonment. Okay. Acha. It was Dalhousie who first pointed out, he was young, so he pointed out one thing, that there is a disproportionate inducting of the soldiers, as in Indian soldiers and European soldiers. One thing, he found that the number of Indian soldiers in the British Army were way higher as compared to number of British or the English or the European soldiers. So he inducted 3 new regiments in the army. 3 new English regiments in the army, and it was his time that Gurkha and Sikh regiments. So when you see any documentary on Indian Army, you will find that Gurkhas and the Sikh regiment has a very long history. There are many such grenadiers are there, or this Madras. Yes. So they have a very long history. One of the oldest regiments in Indian Army, that is Gurkha. And Sikh regiment. So he established this Gurkha and Sikh regiment in Indian Army, and no doubt that this Gurkha and Sikh regiment played a very crucial role in suppressing the revolt of 1857 later on, because Punjab was not involved. Nepal was someone. So Gurkha and Sikh regiment was there. Okay. Then
Another very important contribution of Dalhousie is Dalhousie. Why I told, now you will be able to understand that why we are I said that the beautification of this empire or this building was done by Dalhousie. Now, he saw that though the education or the instruction language is English, and we have started a process of education, but still it is not sufficient. Hence, he appointed a commission under the chairmanship of Charles Wood, and they came up with their recommendation known as the Wood's Dispatch of 1854. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, देखो, इंग्लिश एजुकेशन मैकॉले, इंग्लिश एजुकेशन मैकॉले, लेकिन व्हेन यू सी दिस, फॉर एग्जांपल, it was like every district will have an inspector of schools. So आज हम उसे district education officer कहते हैं. I don't know what it is called in your region, but I think it's the same, DEO, district education officer, and he is in charge of everything in the school, in the district. So ये यहाँ से जो है, and every province will have a director of education. So जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, डायरेक्टरेट एजुकेशन, which still exists in every state. Education is a subject of state. Some part is in, so there are central universities and state universities. So there is a director of education and inspector at every. So also it allowed the private businesses and individuals to open universities and schools at subsidized. तो ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है डलहौजी, ये वुड्स डिस्पैच का था, डलहौजी ने इम्प्लीमेंट किया. सो द रिकमेंडेशन, सो व्हाट इज द चार्ल्स वुड कमिटी ने क्या किया, रिकमेंडेशन दी थी, एंड मोर और लेस इन द सिमिलर फॉर्मेट दोज रिकमेंडेशंस वर इम्प्लीमेंटेड. सो यहाँ से आप देखोगे एक वेव ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होंगे ऑल ओवर इंडिया. सो नाउ दे अलाउड प्राइवेट बिजनेसेस एंड individuals to open schools and universities. यहाँ से शुरू होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का खेल, which are now everywhere. दिल्ली में कभी कोने कोने में चले जाओ, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी. अभी आई विल टेल यू वन थिंग, कभी यहाँ से ना शंकर रोड से जाना हो, इधर 24/7 है शंकर रोड पे अदर साइड, तो आप अग्रवाल स्वीट्स से सीधा जाओगे, मेन शंकर रोड आएगा, टेक अ राइट फ्रॉम देयर एंड यू वॉक टिल दैट 24/7. यू विल फाइंड a building which is smaller than this, and there is a board of a university, and that too medical university. So from there, but the process of giving licenses to the, और यहीं पर examining universities were opened in Calcutta, Bombay, Madras, Allahabad, Delhi. So the universities, these all universities, Calcutta, Bombay, Madras, Delhi University, Allahabad University, after this Wood's Dispatch, these universities were open. Engineering College at Roorkee, which later developed as IIT Roorkee, and Agriculture College Institute at Pusa, Bihar. We are at Pusa Road. So the story is that this Pusa Institute, so आप आगे जाओगे, आगे जाके लेफ्ट लोगे, नेक्स्ट मेन सर्कल से you will take a left and you will reach on the right, you will find Indian Agriculture Research Institute. Fine, and that is called as Pusa campus. When this, after independence, when this was shifted from Pusa, Bihar to Delhi here, so that was कि अब हम उसका नाम वही रखेंगे जो था. So initially it was, so this engineering college at Roorkee, which developed into IIT Roorkee, and the agriculture college at Pusa, which is now Indian Agriculture Research Institute. This is the prime body of agriculture research in India. The Indian Council of Agriculture Research and everything, it's all here. ASRB, Agriculture Scientist Recruitment Board. So आप इसी से आगे जाओगे, अगले सिग्नल से कौन सा राजेंद्र प्लेस से आगे वाला जो बड़ा सर्कल आता है, वहाँ से you'll take a left. So there are two left, so leave the one, take the second left, and then you will go on the right, you will find that whole Pusa Institute is out there. So the same thing, and now you can understand why I am saying that Dalhousie was so important. So education में he has his contribution. So Roorkee और Pusa लिख लेना important है. So engineering college,
and universities at Calcutta, Madras, Bombay, later on at Delhi. And so Delhi University भी उसी दौर की है, Allahabad University उसी दौर की है, Calcutta, Bombay, Madras universities. So these were started as examining universities, means if someone will open a private college, that college will be affiliated to these universities. And see, Delhi University as a campus is different, but you will find various affiliated colleges of Delhi University which are located throughout. So ये process जो है यहाँ से education का जो है शुरू होता है इंडिया में. Fine. Then the next thing that he during his reign was 1853 railways, posts and telegraph. So this railway, telegraphs and postal services were very crucial. So the first railway, Bombay to Thane, which year? 54. 55. अब 57 मत बोल देना, बस डलहौजी का टाइम खत्म हो जाएगा. इट्स ऐसे हिसाब से आगे बढ़ रहे हो. इट इज़ 1853. यस. टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कितना पहले का? 1-2 साल. सो 52 टेलीग्राफ, 53 रेलवे, पोस्टल एक्ट 1854. ऐसे ध्यान रखना. टेलीग्राफ, रेलवे एंड देन द पोस्टल. तो पोस्टल सर्विसेज, सो ये स्टैम्प वाला जो कंसेप्ट है ना, पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड इन 1854. सो आपकी जो IPOS है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर UPSC एग्जामिनेशन, दैट इज इंडियन पोस्टल सर्विसेज. It was started, so there will be a director general, पोस्टमास्टर जनरल जिसे अब कहा जाता है, वो पोजीशंस और ये सारी चीज़ें जो है. और 2 पैसे का टिकट लगाना मैंडेटरी हुआ कहीं से कहीं भी लेटर भेजने के लिए. तो वो जो 2 पैसे यानी कि आधे आने का, 2 पैसा वॉज हाफ आना, 4 पैसा वॉज 4 पैसे का 1 आना होता था. फाइन. सो नहीं, 2 पैसे का और हाँ 2 पैसा वॉज द स्टैम्प दैट वॉज टू बी अफिक्स्ड फॉर. सो अब तो खैर तुम लोग क्या जो है ईमेल वाली जनरेशन हो, बट यस स्टिल देयर वर डेज जब हम एनवलप्स के ऊपर, अब भी आपको अगर पोस्टल जाना है तो आपको स्टैम्प देगा कि आपको स्टैम्प अफिक्स करने पड़ेंगे. अब वो स्लिप लगा देते हैं सिंगल, बट अर्लियर देयर यूज्ड टू बी स्टैम्प्स. सो वो जो है post. So 3 things. Telegraph department was established 1852, railways started 1853 and post office act 1854. तीनों चीज़ें ध्यान रखना. UPSC का मूड हुआ तो क्रोनोलॉजी पूछ लेगी, क्योंकि पास हैं, ऑप्शंस बनते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. तो एक UPSC के प्रीलिम्स में आने वाले सवाल की जो प्रीरेक्विजिट्स हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं. पहला है ऑप्शन बनना चाहिए नियर बाय, दूसरा है कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए. फाइन. सो सारी कंडीशंस जो हैं वो, सो एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट बाय द टाइम द टेन्योर ऑफ डलहौजी एंडेड, बाय द टाइम दिस एंडेड, there were 4,000 miles of telegraph lines in India. So Bombay to Thane was the trial, but by that time Calcutta, ये दिल्ली कैलकाटा वाला रूट था, कैलकाटा बॉम्बे का जो रूट था, ये सारे रूट्स जो हैं इस पे काम उन्होंने शुरू कर दिया. इसी 20 years, if I'm not wrong, 1830s was when this steam engine was, or railways started in England. 1830s, within 20 years it was brought to India. Another thing, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये डलहौजी की देन थी. सो प्रायर टू दिस द पब्लिक वर्क्स, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है? और सीवेज का काम, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वाटर सप्लाई है ना. सो
initially prior to this was all the responsibility of the military board. जब इन्होंने पीडब्ल्यूडी को अलग किया, उससे पहले इट वाज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिलिट्री बोर्ड दैट ये सारा. लेकिन डलहौजी वाज समवन हु सेपरेटेड दिस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फ्रॉम military board, and so they were given the task of making roads, canals, bridges and other infrastructure. Until date it is CPWD or PWD of the state who is looking for all this construction. Two major work that were done in his time. He repaired and restored the Grand Trunk Road, that is GT Road. तुम्हारे इधर से गुजरा है क्या GT Road? नहीं, तुम तो वहाँ से नहीं. हाँ, yes, GT Road. So this is one thing. So GT Road, though the first time that road was constructed during the time of Sher Shah Suri. एक्सटेंड नहीं, वो ठीक है, दैट वाज जस्ट व्हाट मौर्यन एम्पायर के टाइम बहुत छोटा पैच था, बट इट वाज शेर शाह सूरी के टाइम इट वाज फ्रॉम सुनार गांव इन बांग्लादेश टू काबुल इन अफगानिस्तान. ठीक है, ये पूरा पैच बना था. एक रोड बना था आगरा से मुल्तान का. So Delhi was connected to Agra, and then from Agra to Multan. One was from Khandesh to Karachi. So these were like 3-4 major roads that were constructed at the time of Sher Shah Suri. अब क्योंकि इस टाइम पर उतना लंबा स्ट्रेच बचा नहीं था, because Kabul went to Afghanistan. So Grand Trunk Road from Calcutta to Peshawar, that section of the road, larger road that was constructed at the time of Sher Shah Suri was restored and by Dalhousie, and it was named as the Grand Trunk Road, GT Road. ठीक है. So every major city in UP, major industrial city is on either side of this GT Road, or it is connected to GT Road through one way or other. So why he had to repair? What significance? What is the significance of roads? And हाँ, उत्तर पथ. Is anything logical? See, how the trade was coming, either it is railways or it is roadways. The reason was that the major trade was coming through a very smooth and a swift functioning, that was through the maritime trade, the ship trade. Fine. But how to speed up the transportation and trade when it reaches the port, when it reaches the harbor? So how it will be taken from harbor to hinterland, other places. So they started developing railway so that inland movement of goods and goods especially could be made faster. Whether जहाँ रेलवे आ सकती थी वहाँ रेलवे ले जा रहे थे, जहाँ रोड्स, बिकॉज वी हैव सीन दैट जैसे ठगी का इशू था डिस्कस, तो कॉन्वॉयज वर बीइंग लूटेड, दे वर बीइंग रॉब्ड. अच्छा, लूट वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में तब तक नहीं आया जब तक अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान से चले नहीं गए. द वर्ड लूट, LOOT, इट्स अ स्टैंडर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको अल्फाज मिलेगा. वो वही लूट का मतलब वही, लेकिन इट वॉज बीइंग टेकन फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लिश only after the British. It has the same meaning. बहुत हैं ऐसे, but I was talking about loot specifically. तो वो जो है, so all these because faster movement. See, there was, understand this. You take any of this. It was nothing was for us. Nothing was for telegraph was not for us. This was also not for us. Railways were not for us. उन्हें रेलवे हमारे लिए थोड़ी चाहिए थी. दो चीज़ें थी, ट्रूप्स का फास्टर मूवमेंट, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े अपराइजिंग्स हो चुके थे, संथाल, कोल, इस तरीके के जो है मुंडा, ऐसे अपराइजिंग्स हो चुके थे जहां हम इनको ज़रूरत लग रही थी. दैट इज़ वाई डलहौजी ने कहा डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है. आप अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए इंडियंस को बहुत ज़्यादा इंडक्ट कर रहे हो, विच मे प्रूव डेंजरस. सी हिज विजन. उसके जाने के 1 साल बाद वही हुआ. सो एक बार एक क्वेश्चन आया था where means में, although we'll talk about that later, but where there was a comparison which was being asked between Curzon and Nehru. So डलहौजी के बाद कोई खतरनाक किस्म का इस अप्रोच का गवर्नर जनरल आएगा, वो कर्जन होगा, because both were contemporary to each other or the same period. तो कर्जन का comparison था that what Curzon was to British Empire, Nehru was to independent India. Comment.
अब ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल में तो आते हैं, दिमाग में नहीं आते. वही वाली चीज़ हो जाती है इनके साथ. मतलब you are understanding what they are asking, but to be very specific, but for that, if you remember only these points related to any Governor General or any event, this is more than enough to draft an answer. Although Dalhousie has made so much things to India, even though it is for the British Empire, he has done it in India. Yes. But you are comparing with Lord Curzon and Lord Dalhousie and telling these was not that good of a government general. How? Again, the intent is very important. Intent is important. Here it is not what he has done, why it has been done. That is very important. Why courts are taking so long time to establish that whether a person has committed a crime or not. It is just they are trying to establish the intent. Whether that was intentional, unintentional. Whether it was sudden provocation or it was planned. The only time that is why we need lawyers who could ensure that if someone is charged under 302, he is charged under 304. I remember IPC, I don't remember the new, सबके लिए मुश्किल है. पुलिस को बड़ी दिक्कत हो रही है. अब चार्जशीट फाइल करने में डिले हो रहा है. इनफैक्ट तमिलनाडु के एक जज ने स्ट्रेट आउट रिजेक्ट किया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई विल कॉल सीआरपीसी एस सीआरपीसी एंड आईपीसी एज आईपीसी. अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा था हाई कोर्ट को. ऐसा नहीं कर. ऐसा नहीं कर सकते. See, this is the theory of checks and balances which is applicable in our country. That no authority has got supreme power or absolute power. No one has got absolute power. But हाँ, भी आगे चल के आईपीसी सीआरपीसी सब आपको दिखने लगेगा. So, important thing about whether Dalhousie was good or not, to determine this is we have to determine what was his intent of doing so. Was his intent was welfare of a country? No. There will be a Governor General. We'll talk about him as well. Ripon, and he's termed as Ripon the Good because he was good, because his intent was good. Curzon was shrewd. So was Dalhousie. His only aim was to please the Queen. Of course, by his acts of what he's doing here. Any of this thing you take, what is this? Strengthening the army or further dividing us? See, once the division has been made, it is very difficult to integrate it. Very difficult to integrate it. So, he was a very someone who supported free trade, and he was a very staunch supporter of English trade and businesses, and he has good trade. Well, it was his trader friends, let's say, who ensure that Dalhousie reaches India. For the cotton and the tea processing units, the cotton mills and or the textile mills of England, Manchester, largely, and their tea processing units were very much dependent on us for their raw materials. Dalhousie ensured कि कुछ भी हो जाए उन फैक्ट्रीज में कच्चे माल की कमी नहीं होनी चाहिए, and he did that throughout. So he followed a free trade strategy. He opened all the ports of India for the British goods without any charge. Yes, करो ट्रेड करो. बट जैसे एक अच्छी चीज़ जो इसके दौर में हुई वॉज विडो रीमैरिज एक्ट 1854. विडो रीमैरिज एक्ट 1854. For that, Ishwarchand Vidyasagar played a very. We'll talk about social reformers. I've told you at the end. That will be the last lecture of modern history, where we'll be talking about social reformers, tribal and peasant movements.
Okay. I told you there were 5 pillars on which the British Empire was standing. First one, Sir, king ने करा. oh, very good. Second, कल कहाँ थे? चेक करे. क्या हो गया? रेंट बढ़ा दिया? नहीं, सब जो है यही कर रहे हैं. ट्रेड का टर्म्स तुम भी कल नहीं आए थे ना? आए थे कल. निकल गया. क्यों? साथ में शिफ्ट कर रहे थे? नहीं डेंटल अकाउंट और सुप्रीम हाँ, परमानेंट सेटलमेंट सेकेंड, थर्ड सब्सिडी अलायंस एंड नाउ कम्स द फोर्थ. और इसको समझ जाओगे तो सारी कहानी पकड़ में आएगी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. सक्सेशन की. अब इसमें ट्रिकी पार्ट है. जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ब्रिटिश ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था. प्रोटेक्टेड एलाइज और प्रोटेक्टरेट स्टेट्स. पहले सुन लो, लिखना बाद में. इंडियन स्टेट्स को उन्होंने 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. पहला, इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया था, दोज हु रिफ्यूज टू पे एनी काइंड ऑफ होमेजेस एंड बट दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. 2 एस्पेक्ट्स. मान लिया तुम हो, लेकिन हम पैसा वैसा नहीं देंगे तुम्हें. वॉज प्रोटेक्टरेट स्टेट्स, सॉरी इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अच्छा, बहुत सारे थे ऐसे. तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश को किसी तरीके का टैक्स नहीं दे रहे थे, वो किसी तरीके का होमेज और वो नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश. जैसे निज़ाम हैदराबाद, सो ही वाज दैट वाज अ इंडिपेंडेंट स्टेट. हाँ, वो अलाई था, लेकिन वो सब्सिडी अलाइंस में, मतलब दे वर नॉट पेइंग सब्सिडी. उन्होंने सब्सिडी अलाई पे कर रहे थे, वो पे कर रहे थे, बट दे वर नॉट पेइंग होमेज. अब कोई इतना बड़ा स्टेट ही नहीं कि वो आर्मी रख पाए, तो क्या करेगा वो, कुछ नजराना दे देगा. तो 2 तरीके की चीज़ें होती थी. एक कहलाता था नजराना, एक कहलाता था जबराना. नजराना वॉलंटियरी गिफ्ट, जबराना एग्जॉर्टेड गिफ्ट. यस, जबरन, हाँ, it came from that only. So those who refused to pay homage to the British but accepted British supremacy, they were independent. क्योंकि अब कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्ट ना की हो. अच्छा, सेकेंड जो कैटेगरीज है was, let's say this one, protected allies. Protected allies, those who accepted ब्रिटिश सुप्रीमेसी एंड पेड देम होमेजेस. जो उन्हें पैसा भी दे रहे थे और उनकी सुप्रीमेसी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था. दे वर प्रोटेक्टेड एलाइज. बहुत सारे थे ये भी. ठीक है. देन केम द थर्ड वन, दैट इज द डिपेंडेंट स्टेट्स. नाउ दोज राजाज, रूलर्स who were installed by the British, or those states which came into existence after British interference, they were called as dependent states. जैसे Satara was never a state, you'll never hear about it. Jhansi, you'll never hear about it in the medieval times, because it was British intervention which carved out states like this. First thing, मतलब वो खुद कभी उनका कोई हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस नहीं था. अंग्रेज़ों ने, जैसे जब उनको वी टॉक्ड अबाउट द ट्रीटी ऑफ मंसौर,
ट्रीटी ऑफ मंदसौर में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, आई एम सॉरी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर में क्या हुआ, द राजपुताना वॉज गिवन टू ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग, तो या तो वो डिपेंडेंट थे या वो प्रोटेक्टेड थे, और फिर कुछ स्टेट्स उन्होंने अपनी मर्जी से निकाले, कुछ स्टेट्स उन्होंने अपनी मर्जी से कार्व आउट किए, जो कि जिन पे कि उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को बिठाया। तो ये 3 तरीके के स्टेट्स वो कैटेगराइज करते थे, प्रिंसली स्टेट्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड प्रोटेक्टेड। व्हाट वाज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? जो रूलर जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो अपने डायरेक्टली ब्रिटिश शासन में आते हैं। वो ब्रिटिश फिर ऑथराइज हो जाएंगे नेक्स्ट किंग को बनाने के। And they had no right to adopt any. Adoption वहाँ पे काम नहीं हाँ, पहली चीज, एनी किंग और रूलर हु इज नॉट हैविंग अ नेचुरल heir, who is not having a natural successor, his kingdom will automatically become the part of the British Empire. Automatically. अब पहली बार तक पहला किंग मेकर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। दूसरा मेजर डराया सब्सिडरी अलायंस कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो हम अटैक करेंगे। डलहौजी तक आते आते दे सेड दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर नॉट इवन गुड टू हैव अ चाइल्ड, टेक इट। अब डर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, पहले तो इंटरफेरेंस किया किंग मेकर के थ्रू, बहुत सारे अब किंगडम अपने कंट्रोल में लिए, बहुत सारे प्रोविंसेस अपने कंट्रोल में लिए। सेकेंड स्टेज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर दिखाया कि देखो हमारे साथ आ जाओ वरना वी विल अटैक यू, हमारे साथ आ जाओ वरना वी विल अटैक यू। और थर्ड में क्या करा, उनको डर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ख़त्म, बोले कहानी इनकी ख़त्म है, कुछ नहीं कर पाएंगे, दे आर गुड फॉर नथिंग, ले लो। बट दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स was applicable only on dependent states. It was not on all. A potential question lies here. It was not on all states. It was only on dependent states. Dependent states means those states or those rajas who were established or installed on throne by the British government. So आपको झांसी पहले नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा, सतारा दिखेगा, और भी ऐसे होंगे। So Satara was the first state to be annexed under doctrine of lapse. So दो नाम, Hyderabad was the first state to sign subsidiary alliance, and Satara in Maharashtra was the first state. Okay, now this happens. The feed is slow. Okay. This is a very unfortunate state of affair that though it is live, but the feed that they are getting is way slow, because just now someone has answered 1853 means वो रेलवे वाली बात अब पहुंची है। So there is a lag of almost 10 minutes, roughly more than that. 10 मिनट का तो लैग है। हाँ, जो है सर उस दिन जब मैंने क्लास ली थी नहीं होता है, 30 to 40 सेकेंड्स होता है, ठीक है, ज़्यादा है। अभी समवन हैज आंसर्ड 1853 मीन्स नहीं 10 मिनट्स, 20-25 मिनट तो नहीं, 10 मिनट, ठीक है। सो दिस इज हाउ डलहौजी, so this was like what Dalhousie did. Damodar was, I guess, name of Rani Lakshmibai's son. हाँ, दामोदर राव। Damodar Rao. और 1856 में ये भाई साहब चले गए। 1856 में फर्स्ट इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1844, बट डलहौजी ने आते से ही इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत कर दी थी। सो 1844 में पहली बार ये जो है बेसिकली इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय डलहौजी बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय डलहौजी। 44 में फर्स्ट टाइम दिस आइडिया ऑफ annexation was introduced, but it was Dalhousie after 48 he implemented this. हाँ, I'll confirm.
Sorry? Okay, Ayush is saying it's completely fine. ठीक है बेटा. Maybe someone individual's feed may have been low. Yes, so अच्छा, note down. 18 note down. Thus, Satara 1848. The year they were annexed. Satara 1848. Jaipur Sambalpur 1849. Jaipur Sambalpur 1849. Jhansi 1854. Baghat 1850. Baghat is in Himachal Pradesh. Baghat 1850. Tanjore and Arcot 1855. Tanjore and Arcot 1855. Awadh 1856. बट अवध को एनेक्स किया था उन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन पे. अवध पे ना एक वो लगा देना, कंडीशन लगा देना. सब कुछ था, लेकिन उनको जो एनेक्स किया था वो इस ग्राउंड पे किया था दैट बिरजिस कादिर को अरेस्ट कर लिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेड दैट नाउ यू डोंट हैव अ नेशनल एयर बिकॉज ही इज गॉन. तो हाँ, फाइन. बट हाँ, what was the second one? Jaipur Sambalpur, Odisha. Jaipur is in Bundelkhand and Sambalpur is in Odisha. The Hirakund or Hirakhand. अवध का, अभी अवध की कहानी दोबारा देखेंगे because it will be a main character, main place of action in the revolt of 1857. So we'll talk about Awadh again. But Awadh 1856, you just write it here. Okay, अभी अवध में फिर से बात करेंगे. So a possible question again कि which state मैच में नहीं आएगा. इसमें अगर आएगा, ईयर आना थोड़ा सा अनलाइकली है कि वो ईयर पूछे, लेकिन हाँ वो ये पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट एनेक्स हुआ था या कौन सा नहीं हुआ था. सो क्वेश्चन कैन बी दिस वे, इट्स नॉट द ईयर और क्रोनोलॉजी. जनरली क्रोनोलॉजी वो नहीं पूछते हैं, बहुत कम होता है द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईयर्स. बट हियर दे कैन आस्क यू दैट विच ऑफ द स्टेट्स वर annexed under which of, they can give you a list of 5-6 states. Fine, that these are 5-6 states. Which of these states were annexed under, or how many of the following states were annexed under doctrine of lapse? Only 1, 4, 5, whatever. They can come like this. Fine. So Satara, Jaipur is in Bundelkhand. Sambalpur is in Odisha. Baghat is in Himachal Pradesh. Udaipur is in Chhattisgarh state. 1852 Udaipur, but Udaipur in Chhattisgarh, not the Udaipur of Rajasthan. And that is why I'm saying Udaipur in Chhattisgarh state 1852, Jhansi 1854, Nagpur 1854, Tanjore and Arcot 1855. Jhansi and Nagpur 1854. अच्छा, अवध को लेके इट इज़ अ कन्फ्यूजन. सो अवध विल नॉट बी इन द लिस्ट इफ देर इज़ अ लार्जर कन्फ्यूजन विच इज़ प्रिवेलिंग, क्योंकि कुछ का कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कहा, कुछ ने कहा कि माल एडमिनिस्ट्रेशन. सो देयर इज अ कन्फ्यूजन. बट अपार्ट फ्रॉम अवध, ऑल द स्टेट्स, दीज वर द स्टेट्स विच वर एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, this policy was ended in the year 1858. So from 1848 to 1858, this policy was in force. देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यार. सो दिस वाज देयर ओनली फॉर 10 years, क्योंकि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा होगा कि नाउ देयर विल बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया जाएगा. तो वो उनका जो फ्रीडम है वो इंश्योर कर दिया जाएगा. फाइन, क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? जी. आप समझ में आए डलहौजी, या अगर यू नो इफ यू टॉक अबाउट लाइक no doubt if you see the good side
and or if you see from the side of the British Empire, he was one of the most foresighted governor general ever. Fine, who not only consolidated East India Company but laid the groundwork for its later administration as well. See the way postal, ये वो सारे departments establish किए. Canal work, the Ganga Canal, ये उसके टाइम का काम है, गंगा कैनाल. So the Ganga Canal, various canals in Punjab. So irrigation को जो है वो enhance करने का काम. क्यों? इरिगेशन एनहांस होने से क्या होता? प्रोडक्शन अच्छा होता. उससे क्या होता? So that is where Rohit, we talk about that intent is very important. Beautification. So I am talking in context of the British Empire. I am not talking in context. From our context, he was very dangerous. But we were technically insignificant at this point of time. Why, where are we? Nowhere. He also had, I'll tell you one more thing, but that was done by Canning. Dalhousie और Canning ने जो है ना एक और काम किया मिलके, because Canning was a successor, so the one who succeeded was Lord Canning. Dalhousie had a deal with Fakhruddin, who was the apparent heir of Bahadur Shah Zafar, that you will hand to us all the forts and you will denounce all the titles. Now there can only be one title and that is of the Queen. ये पहले ही इनके बीच एक डील हो गई थी. So अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं होता, बावजूद उसके बहादुर शाह जफर was destined to be the last Mughal ruler. He tried. See, why Bahadur Shah Zafar is treated as, or he is respected as a Mughal, not because he did nothing. He was a poet, शायर था. यही दिल्ली के लाल किले की बात है. हाँ, मतलब every Thursday night was a मुशायरा night in लाल किला. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. गालिब गए ज़रूर थे कि बहुत ज़्यादा. किसको मतलब? रूल तो कोई कर ही नहीं रहा था ना. बाकी तो वो बस एक सेरेमोनियल पोस्ट थी. ज़ौक़ उनके उस्ताद थे. ज़ौक़ के इंतकाल के बाद जो है गालिब उनके उस्ताद हुए थे. ये दौर था उर्दू अदब ने, और ख़ुद बहुत अच्छे शायर थे. बहादुर शाह जफ़र उनका लक़ब था, द पेन नेम. So he was Bahadur Shah II. Zafar was his pen name. Like the real name is Mirza Asadullah Khan. Ghalib was his pen name. Fine. So that was the period in Delhi. This is just any point of time that go to what is that? बली महारान में नहारी खाने का मन तो नहीं होगा. नहारी खाने का मन तो हो जाएगा, बट नॉट द बली महारान नहारी. ना इट्स अवेलेबल अलीगढ़ में भी तो खुल गया है. हाँ, every month there is, I visit Aligarh every month. My in-laws live there. I went to Aligarh to gain my master's and doctorate and lost my bachelorhood there because I got married in Aligarh. So my in-laws, you know, and that is a place, I don't know, he's from there, he can understand. Or wherever you are from, what is that Lucknow से क्या नाम उसका? That हाँ रविशंकर. लखनऊ से नहीं है, but he has some roots. Okay. It's from Odisha. Okay. But Aligarh is, I don't know, it has a rich history, and you cannot, and technically we will be reading about Aligarh in this process also of reading modern Indian history. So and this is, there are only 3 institutes which are listed in Schedule 7 of the Constitution as institutions of national importance. So one is Delhi University,
another is Banaras Hindu University, and third is Aligarh Muslim University, and such similar institutes. So if you will see Constitution, and you will see Schedule 7, so there are only 3 institutes which are listed. You know, recently एक अच्छी सी न्यूज़ सुना दो. बांग्लादेश डिफीटेड पाकिस्तान बाय 6 विकेट्स. ये फिर हार गए. सही है, सही हो रहा है. मैं कभी कभी सोचता हूँ बहुत अच्छा हुआ. कौन सी मॉल की? पाकिस्तान में सर कब हुआ? दो अच्छा. मॉल खोला अब तो खैर नहीं उतना आना जाना नहीं है लोगों का. बट अब भी अगर किसी को जाना है तो दे हैव टू गो बाय दुबई, मिडिल ईस्ट डायरेक्टली. अभी बस सर्विसेज वगैरह सब सस्पेंडेड है. सो अर्लियर जब लोग आना जाना था, सो इट वाज एडवाइज दैट स्पेशली जो कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे उनके रिलेटिव्स वहाँ थे, दे यूज्ड टू से कि अगर वो आप वहाँ जाते थे या अगर कोई रिलेटिव वहाँ जाएगा तो द फर्स्ट थिंग इज़ यू डोंट यूज़ अ स्मार्टफोन. तब स्मार्टफोन नए नए निकले थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2010. तो स्मार्टफोन्स जो है उनकी शुरुआत हुई थी बिकॉज यू विल बी रॉब्ड. द रेट ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान इज़ वेरी हाई. There's a see always I've told you, na, the religion and the politics paradigm. Any state cannot run by religion. No state can be run by. If you want to develop, especially in the modern times when you talk about capitalism, because capitalism cannot survive without democracy. For democracy, having a neutral, religious neutral, system is very important. यस, आप बगैर एक सेक्युलर अप्रोच के कैपिटलिज्म फ्लरिश ही नहीं कर सकता. कैपिटलिज्म इज नॉट बैड अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव. But if it is giving power to you, today if you are like if Reliance or Tata's and they are coming and they are empowering you as a consumer, what is wrong in that? They're saying that we are not charging anything. You want anything, you go, you just need to have a good. Today you don't need to have good bank balance. You need to have a good credit score. Even if you don't have a bank balance, you can get anything you want. This is the power of capitalism. So unless and until it is not exploitative, yes, there is a side of capitalism which is bad. अब जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो अब गलत हो रहा है. वो तो हो चुकी है, वो गलत है, विच इज़ डेंजरस. बट हाँ, अगर आप FMCGs की बात करेंगे, कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे या रिटेल में बात करेंगे तो हाँ, आप इंडियन कंज्यूमर का पिछले 10, 15, 20 सालों में काफ़ी कुछ स्टेटस ऊपर हुआ है. इट्स ट्रू. जैसे अभी किसी ने नहीं सोचा, सी द कार्स आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑन EMIs नाउ, एंड दैट इज़ वाई एवरीवन इज़ बाइंग एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ ट्रैफिक. How all of a sudden, see, I have seen like, मैं आज से मतलब where I live today, I shifted there 5 years back. But like after 10 in the night, even I said कि नहीं आना है. It was so, कोई नहीं होता था. 10 बजे रात के बाद कुछ गाड़ियाँ आती जाती थी, simple, it's all silent. Now the condition is that if you move out at 6 in the evening, you'll be stuck in the traffic jam in the same place. So from where all of a sudden these vehicles have come? It is one of the other side of the consumerism which has grown and developed in past decades. Purchasing power तो ठीक है, purchasing power तो कम हो रही है if you compare it with inflation. But the problem is that ease of access जो है ना वो बढ़ गया है. मिडिल क्लास का बेस बढ़ गया. हाँ, और क्या हो गया सर? नो कॉस्ट EMI. पहले इंटरेस्ट लगता था, अब नो कॉस्ट EMI है. तो टेक्निकली कोई नहीं होता, वो 800-900 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर ही लेते हैं एक ट्रांजैक्शन पे, विच इज़ देयर अर्निंग. बट दे आर स्टिल सेलिंग दिस क्योंकि उनको पता है कि एटलीस्ट कॉस्ट तो निकल के आएगा ना. सर इनका मार्केटिंग भी बहुत अग्रेसिव है सबका. रिफिलिंग में बाइक हियर इन पुसारोड, देयर वाज अ पर्सन विद SBI क्रेडिट कार्ड. मैंने बोला उसको मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इनकम नहीं है,
तुम क्रेडिट कार्ड नहीं दोगे मुझे, वो फिर भी मार्केटिंग करेगा कि आप ओवरसीज पेमेंट करो, ये करो, वो करो. You see every petrol pumps और वो शॉपिंग मॉल्स, तो ये ठीक है. ग्रेजुअली देखो हर चीज़ का अच्छा बुरा साइड होता है, लेकिन हाँ ये तभी ग्रो करेगा जब एक स्टेबल political environment होगा. I'm not concerned about the political ideology which is prevailing, but yes, if there is a stable political environment, this will flourish. See, इंडिया में आप 90s के बाद देखोगे तो शुरू का थोड़ा सा टर्मोइल का फेज था, लेट 90s में 96, 97, 98, 99. आफ्टर 99 वी हैव कॉन्टिन्यूसली स्टेबल गवर्नमेंट्स, किसी की भी रही हो. After 1999 we have stable governments, and you see after 1999 how we have grown from 77 to 97, let's say 20 years, though there were some stable governments. मिसेस गांधी की स्टेबल गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी ने 5 साल किया, लेकिन फिर एक फेज़ आता है ऑफ अप एंड डाउन, पूरा टर्मोइल था. वहाँ से देखो, और जितना क्राइसिस हुआ, सो फ्रॉम आई कैन से फ्रॉम 85 टिल लेट्स से इन दैट डिकेड वी सॉ हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स. सो देयर वाज राजीव गांधी, देयर वाज वीपी सिंह, देयर वाज चंद्रशेखर, एंड देन देयर वाज पीवी नरसिम्हा राव. So in a span of 10 years, we saw 4 prime ministers, 3 different governments, and the balance of payment crisis. You are drained out of our foreign exchange reserves. ये होता है. So that Pakistan is bound to destroy. वो आज नहीं तो कल अपने आप collapse कर जाएगा. प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा ही नहीं हो सकता. आज तक कोई नहीं कर पाया. पूरा ही नहीं. रिसेंटली उनका 55% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई. हाँ. वो बढ़ती जा इसका टैक्स भी तो बढ़ चुके हैं. नहीं, मिलिट्री कूप्स हुआ है वहाँ पे. मतलब by the time Nehru died, they have seen 7 prime ministers. So Nehru ji died in 1964. By 1964, there were 7 prime ministers in Pakistan. This shows their unstable political, So this was Dalhousie. Coming back, now let us talk about the Charter Act of 1853. Charter Act of 1853. Acha. The purpose of earlier Charter Acts was renewing the license of the company, let's say. पहले के चार्टर एक्ट क्या कर रहे थे, हर बार 20 साल के लिए कंपनी का टेन्योर जो है वो बढ़ा देते थे. इस बार भी क्या हुआ, दैट कंपनी का जो चार्टर था या जो कंपनी का लाइसेंस था, लेट्स से, वो रिन्यू तो हुआ बट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. चार्टर रिन्यूड फॉर एन इनडेफिनिट. अब पहले क्या होता था, 20 years चल रहा था ना वो. सो देयर वाज नो पर्टिकुलर ड्यूरेशन दैट वाज डिफाइंड फॉर रिन्यूअल. द कंपनी वाज allowed to continue ruling India, but again its powers were further scrutinized by the British government. So Parliament again started to अच्छा it introduced the governor generals. अभी तक क्या था, there was a governor general's executive council which was doing all the things, but now they introduced ऐसे. एक बात बताओ, तुम लोग ये एक्ट तो पढ़ चुके हो, तो बोला नहीं जा रहा है कि सर ये तो हो चुका है. पहले बताना चाहिए ना, मुझे एकदम से याद आया. सो व्हाट हैपेंड, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो. What happened? There were 6 additional members were added to the council, but they were not the part of the executive council. Now there are 2 councils. One is Governor General's Executive Council and Governor General's Legislative Council. 6 members were a part of this, and they were they have just the legislative task. So for the first time, the legislative and the executive functions were separated, and for the very first time, there was, or you can say that this was laying the foundation of a systematic legislative process in India.
दिस एक्ट ऑफ 1853 laid the foundation of systematic legislative, क्योंकि अब legislative council भले ही 6 members की है, लेकिन है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जहां से जिस चीज के लिए यू ऑल आर